So let's start with the very first question. The ellipse x square plus 4y square equal to 4 is inscribed in a rectangle aligned along with the coordinate axis, which in turn is inscribed in another ellipse that passes to the point 4, 0. Find the equation of the ellipse. तो basically अपने को एक ellipse की equation दी हुई है x square plus 4y square equal to 4. Okay, and from here I can convert it into the general equation, which is x square upon 4 plus y square upon 1 equal to 1, because I took 4 that side, so this is my general equation. And now I will compare it with my general equation of ellipse, which is x square by a square plus y square by b square equal to 1. So on comparing, I am getting my a square equal to 4. So a is equal to 2. Okay. And similarly, b square is equal to 1. So b is equal to 1. Okay. So my ellipse will look something like this. Uh, okay. So this is my ellipse. And in this one, okay, then this is my a equal to 2, 0. This point is 2, 0, and this point is minus 2, 0. Okay, so 2, 0 and minus 2, 0. And this point is 1, 0, and this point is minus 1, 0. So this is inscribed inside a rectangle. So basically my rectangle would be something like this. Okay, this is my rectangle. Then they are saying what? They are saying which in turn, the ellipse is inscribed inside the rectangle along with the coordinate axis, which in turn is inscribed in the under ellipse that passes to the point 4, 0. अब 4, 0 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, तो ये एक अलग इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है जो कि ऐसे जा रहा होगा. ओके, सो ये मेरा कंबाइंड डायग्राम है. बेसिकली जो मेरा ये वाला इलिप्स है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 0. तो अगर यहाँ पे 4, 0 है, तो सिमेट्री से जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट वुड बी माइनस 4, 0. ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर इलिप्स. तो बेसिकली मेरे को इस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है. ओके, सो सबसे पहले तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर इलिप्स, आई नो दिस थिंग. एंड सिंस दिस इज पासिंग थ्रू 4, 0, so I can take 4, 0 here, and on taking 4, 0, I will get the value of my what we say x and y, because since it is passing through 4, 0 and this thing is my a, so in this case my a is equal to 4. So I can put the value and I can get the value of b, because since y is equal to 0 in this case and my ellipse is passing through 4, 0, so on putting the values, my answer would be 4 square upon 16. uh, 1 second. My this ellipse is passing to the point 4, 0, and this point is how much? This point is 2, 1. So since the bigger ellipse is also passing to 2, 1, and 2, 1 will satisfy the equation of ellipse, so let's put 2, 1 in this equation. You will get 4 by 16
So basically in this here, they have put the point 2 comma 1 in the equation of ellipse. So you will get 4 upon 16 plus 1 upon b square equal to 1. So from here you are getting the value of b square to be equal to 4 by 3. So put the value of b square in the equation. You know that a square is 16, b square is 4 by 3. Just put down the values and you will get your final answer as x square by 16 plus 3y square upon 4 equal to 1. So this is the final answer. So this was a very simple question. You just need to calculate this point and then put this point in the equation of general equation of ellipse. From there, you will get the value of b square. A square is already with you because a is equal to 4 in this case. So a square is 16. You just need to calculate the value of b square. You calculated the value of b square using this point 2 comma 1 and just put this 2 comma 1 point in this ellipse equation and you will get your final answer. Okay. So this was my first question, and now moving ahead, not first question. Let's move on to the next one. So in this question, they are saying that a line passing through the extremity A of the major axis on is an extremity B of the minor axis of the ellipse x square plus 9y square equal to 9. So the ellipse is x square upon 9 plus y square upon 1 equal to 1. So this is my general equation of ellipse. Okay, so this is my equation for ellipse, and they're saying that first let's draw this ellipse. So this ellipse would look something like this. Okay, and then they are saying that the line passing to the extremity A of the major axis, which implies this line, and extremity B of the minor axis, which implies this line. Okay, meets its auxiliary circle at the point M. So this point is M, and this is the auxiliary circle of this ellipse. So find the area of the triangle with vertices at A, M, and origin O. What is A? A is this point. Origin is this point. So मेरे को इस triangle का area बताना है. Okay. So firstly, I can see from here that A square is equal to 9. A square is equal to 9. So from here, I can deduce that the value of my A is equal to 3. Okay. So value of A is equal to 3. So A is equal to 3 and B is equal to 1. So my point A is 3 comma 0 and my point B is 0 comma 1. So basically I've got these 2 points, and then I know that the equation auxiliary equation of ellipse is x square plus y square. If you don't know, then auxiliary circle की जो equation होती है ellipse के लिए, that is equal to x square plus y square equal to a square. And since here a square is equal to 9, so this is my auxiliary equation circle. So this is my line AM. I know the point A, and I know that I can write the equation of this line using the point A. How? I know that y is equal to mx plus c, and in this case m would be equal to how much? M would be equal to minus 1 by 3 into x plus c, mx plus c, so mx plus c. जनरली हम ऐसे लिखते हैं ना, y is equal to mx plus c, ये होती है मेरी जनरल इक्वेशन. Okay, so this is my general equation, and I wrote the equation of am using this general equation, y equal to minus 1 by 3 x plus 3, because slope of line is minus 1 by 3. ओके, सो बेसिकली मैंने लिखा कैसे, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा ए पॉइंट है ये है मेरा, हाउ मच दिस ए पॉइंट इज 3,0. ओके, एंड माय इक्वेशन m, दिस पॉइंट m इज इक्वल टू हाउ मच? m would be equal to 3,1, not 3,1 actually. How to calculate the value of point m?
Okay, let's see that this point is 0 comma 1. Okay, so if we write the equation of this point, this line, the equation of this line would be, which is the equation of A and this point, whatever we say, let's say this point is B. So equation of AB would be y minus 1. If I take this point, y minus 1 equal to slope. Slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is minus 1 by 3. So minus 1 by 3 into x minus 0. So this is the equation of line AB. Okay, this is the equation of line AB. And I need the equation of line AM. And so my AM, uh, so I got the equation of AM, and from this equation of AM, I got the value for my x. Now I know that the equation of auxiliary circle is x square plus y square equal to a square. And since they are seeing that this point lies on the auxiliary circle, so put the value of x from here to here, and you will get this equation from where you will get the value of y. From y, you can calculate your x. So you have got the value of m. M is minus 12 by 5 and 9 by 5. So you have a, you have origin 0 comma 0, and you have m. Then simply apply the area of triangle formula, which is half times determinant of x1, x2, x3, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y1, y2, y3, and 1, 1, 1. From this, you can solve for the equation and you will get a final answer for the area of triangle. Okay. So moving on to next one, this was my area of triangle AOM, which is 27 by 10. If 3x plus 4y is equal to 12 root 2 is tangent to the ellipse this, मेरे को एक ellipse दिया हुआ है, उसकी tangent दी हुई है. For some a belonging to real, मेरे को ये नहीं पता. Then the distance between foci of the ellipse is how much? Basically एक ellipse दिया हुआ है मुझको ऐसे करके, and they are saying इसकी कोई tangent दी हुई है मुझे, और इन दोनों का जो foci होगा ना, ये वाला point और ये वाला point, इसके बीच का मुझे distance बताना है. And I know that distance between foci is 2 times AE. So basically मेरे को A और E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अगर मैंने A निकाल लिया, then I can easily calculate E using the formula E square is equal to 1 minus B square by A square. ओके, एंड मेरे को अभी इलिप्स की एक टेंजेंट दी हुई है, और मेरे को पता है जो टेंजेंट के लिए जो इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इन इलिप्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इन इलिप्स. ठीक है, तो अब बस मेरे को इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है, मैं यहाँ से कंपेयर कर लूंगा, और कंपेयर करके मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा. यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि m तो हो जाएगा -3/4, एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √2. तो वहां से मेरे को बी स्क्वायर मिल जाएगा. अब मेरे को बी स्क्वायर मिल गया, देन आई कैन इजिली कैलकुलेट फॉर माई ए ऑल्सो. मतलब 20 को मुझे दिया हुआ है 9, तो मैं यहाँ पे 20 को 9 पुट कर दूंगा, और फिर मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 9 को √2 के इक्वेट करके मेरे को मेरा ए मिल जाएगा. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए, I know that I can calculate E using this formula. This is the formula for calculating eccentricity of ellipse. For hyperbola, only there is a positive sign, and this rest remains the same. So you have calculated the value of A, you know the value of B, you have calculated eccentricity. So you can simply write the distance between two foci of ellipse, which is equal to 2 times AE. A is 4, and E you calculated √7/4. So from there, you can simply write 2 √7 as your final answer. Okay. So this was the main equation, main thing behind this question. You just need to know about the equation of ellipse and then need to solve it. Okay. Moving on to next one. An ellipse has OB as semi minor axis. ये जो मेरी OB axis है ये semi minor axis है.
एंड एफ एंड एफ डैश आर इट्स फोकाई, मतलब एक फोकाई ये है और एक फोकाई ये है। एंड द एंगल एफ बी एफ डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ये 90 डिग्री दिया हुआ है मुझे। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज हाउ मच। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल वाली इक्वेशन लगा देता हूँ। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ मैं। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? एफ बी स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डैश बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एफ। So you know that f dash b is equal to how much? This thing is nothing but root of b minus 0 square, which is b square, plus 0 minus ae ka square, which is a square e square. And this distance will also be the same because coordinates are same only. So it would be 2 times, since we have to square it. So it would be 2 times b square plus a square e square equal to f dash f is equal to 2ae. So square of 2ae would be 4 times a square e square. Okay, then it is 2b square equal to 2 times a square e square. So 2 and 2 will cancel, and from here you are getting your eccentricity to be equal to b square by a square. So you can see e square is equal to b square by a square. Okay, so and you know that the formula for eccentricity of ellipse is equal to 1 minus b square upon a square. And since this thing is equal to b square upon a square, so you can equate both the two equations. Okay, so you can simply equate them. On equating them, what you will get? You will get 1 is equal to 2 times b square upon a square, and from here b square upon a square is equal to 1 by 2, and that's what was equal to e square. So this thing is equal to how much? This thing is equal to 1 by 2. So from here you can simply write your e equal to 1 by root 2, simple. ठीक है, तो 1/√2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल था, यू हैव टू जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके द ई व्हिच यू विल गेट, you need to equate this thing with this equation, and on equating you will get the value of b by a as b square by a square is 1 by 2, and since e is equal to b by a, so you need to take the root of this thing, so the root is 1/√2. So e equal to 1/√2 is your final answer. Okay, so moving on to next one. Find the equation of the ellipse whose axes are the axis of coordinates and which pass to the point -3, 1 and has eccentricity equal to √2/5. So इसमें मेरे को सबसे पहले तो eccentricity दी हुई है कितनी? Eccentricity is equal to √2/5. So you can simply do e square, and on doing e square you will get 2/5. Okay, but you need to calculate the equation of ellipse. सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि ई स्क्वायर जो होता है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। फॉर केस ऑफ इलिप्स दिस थिंग इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 2/5।
So from here, you can get the value of b square upon a square to be equal to 1 minus 2 by 5, which is 3 by 5. Okay, so b square by a square is 3 by 5. Then the general equation of ellipse is how much? This thing is equal to x square upon a square plus y square upon b square इक्वल टू 1. ठीक है, अभी मेरे को पता है कि b और a का जो रेशियो है, दैट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का जो रेशियो है वो 3/5 है. तो यहाँ से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ? अगर मैं a स्क्वायर को लेट करता हूँ 5k, if I will let this thing, then my b square would be 3k. ओके, और मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ है -3,1. सो मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो 9 अपॉन a स्क्वायर इज 5k प्लस y square, y is 1, so 1 upon b square, and b square is 3k is equal to 1. So this thing overall is how much? 15k. So 9 3 are 27. 27 plus 5 is equal to 1. So from here I am getting 15k equal to 32. So k is equal to 32 by 15. अब k मिल गया तो I can calculate the value of a square. A square is 5k, which is equal to 32 by 3. And similarly, b square is equal to how much? B square is 3k, which is equal to 32 by 5. So आप ये a square b square की वैल्यू इसमें डाल दो. So जब इसमें डालोगे तो let me erase it first. So on putting the value, you will get x square upon a square. A square की जगह डाल दो 32/3. So 32 upon 3 plus y square upon b square की जगह डाल दो 32/5. So 32/5 equal to 1. This is my final answer to this question. Again, fairly simple one. You just need to put on the values and you will get the final answer. Okay. Moving ahead. In an ellipse, the distance between the foci is 6. And अभी बताया था कि distance between two foci is given by 2 times AE. And 2AE is given out to be equal to 6. So from here, you can simply write AE is equal to 3. Okay, and then and minor axis in an ellipse, the distance between the foci is 6 and minor axis is 8. अच्छा, distance between foci is 6 and minor axis is 8. मतलब जो मेरे को b की वैल्यू दी है, they are saying b is equal to, or 2b is equal to 8, so b is equal to 4. Okay, so a is equal to 3 and b is equal to 4. अब मेरे को वापस इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन पता है. इसेंट्रिसिटी की जो इक्वेशन होती है, that is equal to 1 minus b square अपॉन a square ये होती है. तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी इक्वेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एच स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए इज 3, so 3 square is 9. So 9 is equal to a square minus 8. So a square would be how much? A square would be 17. So b square is 16. No, sorry. Let me erase it. So a square minus 16. From here, you are getting the value of a square to be equal to 25. So a is equal to
5. ओके, ए हो गया मेरा 5। अब मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। सो यहाँ से मुझे ई मिल जाएगा इक्वल टू 3/5। And they were asking me the eccentricity only. So I've calculated my eccentricity, which is coming out to be equal to 3/5. So 3/5 is my final answer. So eccentricity is 3/5. Okay. So this was the solution for this question. Okay. So let's move ahead. So in this question, if the distance between the foci of an ellipse is 6, so again मेरे को दिया हुआ है क्या? 2AE 2 times AE is equal to 6. Okay, and distance between the directrices is 12। और मेरे को पता है जो मेरी डायरेक्ट्रिसेस होती है उनकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस कितना हो गया? 2a/e। सो मेरे को 2a पता है 6 के बराबर है, एंड 2 टाइम्स a/e इज इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स a/e इज इक्वल टू 12। So from here I can see that my a is a e। I can calculate the value of a from here, and I am getting this thing is equal to 3 by how much? 3 by e. Cool. And similarly, I can do here. So 2 times 2 into 3 is 6 basically. So 6 upon e square is coming out to be equal to 12. So my e square is equal to half. E square is equal to half. And from here, I can simply say that my e is equal to 1 by root 2. So I've calculated the value for my E, and E is coming out to be 1 by root 2. But they are asking me the length of latest rectum. Okay. And the length of latest rectum is equal to 2 times B square by A. So this thing is equal to how much? For that, I need to calculate the value of A and B. And I know that A is equal to 3 by E. So that thing is equal to 3 root 2. So my value of A is 3 root 2. Okay. And the value of B would be, I can calculate using the formula for eccentricity, which is E square is equal to 1 minus B square by A square. I can simply use this formula to calculate the value of my what we say isn't B. So E is equal to how much? E is equal to 1 by root 2. So E square is 1 by 2. 1 by 2 is equal to 1 minus B square by A square. And B square I need to calculate. A square is 3 root 2, that is equal to 18. So from here I am getting the value of B square to be B square by 18 is equal to half, and B square is coming out to be equal to 9. So B is equal to 3. So the length of latest rectum is 2B square by A, which is equal to 2 times 9 by A, and A is nothing but 3 root 2.
So 2 into 9 upon 3 root 2, which is equal to 6 by root 2, which is 3 root 2. So 3 root 2 is the length of my latest rectum. This is my final answer to this question. Okay, so this is my final answer. Okay, so this was the length of latest rectum in this case. So I hope you got it. So let's move ahead. Tangents are drawn from the point 3, 4 to the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. मैंने इस पॉइंट से 3, 4 से इस टेंजेंट इस इलिप्स पे टेंजेंट इस इलिप्स पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी एंड दैट टेंजेंट टच द इलिप्स एट पॉइंट्स ए एंड बी. तो मेरे को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने. ठीक है, तो चलते हैं वापस वही चीज़. सबसे पहले तो इलिप्स की जो इक्वेशन दी है पहले मैं वो लिख लेता हूँ. एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. और ये तो मेरी इलिप्स की इक्वेशन है. एंड दे आर सेइंग दैट दे हैव ड्रॉन अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 3, 4. ओके, सो लेट अस प्रोसीड इन द सेम वे. मेरे को दिया हुआ है कि जो पॉइंट है वो 3, 4 है. 3, 4 से मैंने इस टेंजेंट पे एक टेंजेंट इस इलिप्स पे एक टेंजेंट डाली है. तो मेरे को पता है उसकी इक्वेशन में स्टेप्स लिख सकता हूँ. एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, ये मेरे को मैं पढ़ता हूँ ना कि जब मेरे को एक्स स्क्वायर का टर्म दिया जाता है तो एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स एक्स वन से. वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा वाई वाई वन से. एंड जब मेरे को 2xy दिया रहता है तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ एक्स एक्स वन एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स वन वाई. वैसे रिप्लेस कर देता हूँ. तो वैसे ही यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको. तो यहाँ से मुझको मिल जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज एक्स एक्स वन बाई ए प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, अब मेरे को पता है कि जो मेरे को पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वन कॉमा वाई वन क्या दिया हुआ है. एक्स वन कॉमा वाई वन इज गिवन टू मी हाउ मच दिस पॉइंट इज इक्वल टू 3, 4. 3, 4. So 3, 4 is the point. So put 3, 4 in this equation. You will get 3x by 9 plus 4y by 4 equal to 1. From here, you are getting the equation of this line, which is x equal to 3 times minus y plus 1. But x equal to 3 times minus y plus 1. This x will satisfy the equation of ellipse also, because this tangent is touching the ellipse. So if you need that these both curves touch at some point, so the value of x should satisfy this equation of ellipse also. So put the value of x in this equation. You will be getting how much? 9 times 1 minus y whole square. 9 times 1 minus y whole square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. You will get this equation. Okay, and from here 9 and 9 will cancel, and you will be getting 4 plus y square minus 8y, 4 plus 4y square, sorry, plus y square equal to 1. So 5y square minus 8y, sorry, 5y square minus 8y plus 3 equal to 0. So this is a quadratic equation, and when you will solve this quadratic equation, you will get these roots y into 5y upon 4 minus 2 equal to 0. So from there, you will get two answers for your this equation. If I have not done this thing wrong, y square plus y square equal to 5y square minus 8y plus 3 equal to 0. Okay, and from here I am getting 15. 15 is 5 into 3. So you will substitute it in this way: 5y square minus 5y minus 3y plus 3 equal to 0.
So from here, 5y I will take common, and I will be getting y minus 1, and similarly minus 3 here, so I will be getting y minus 1. So from here I'm getting the value of y to be either 3 by 5 or equal to 1. Okay, so I guess if I am wrong somewhere or they are wrong somewhere, x is equal to 3 times minus y plus 1. When I will put it in this equation, I will get 9 times y 1 minus y whole square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1. So this thing is equal to y square minus 2y plus 1 plus y square upon 4 equal to 1. So on substituting, I will get, okay, then on substituting, I will get 4y square plus 4 minus 8y plus y square equal to 4. Okay, this thing is equal to 4, sorry. So this 4 and 4 will cancel. I forgot this 4. So that's why this thing is wrong. So you will get these two values for y, either equal to 0 or 8 by 5. And from this value of y, you can calculate the value of x by putting it in this equation. You will get the value of x. So for two values of y, you will get two values of x. So you have got 2 points, which are 3 comma 0 and 3 comma 0 and minus 9 by 5 comma 8 by 5. Okay, so basically these are the 2 points which will satisfy your tangent. मतलब अगर आप कोई tangent draw करते हो किसी point से, and if it comes and touches this ellipse, so it will touch at these 2 points. Okay, so the tangent will come and touch at these 2 points in the ellipse if you will draw tangent to this ellipse. Basically आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे x square को x x में कन्वर्ट करोगे और y square को y y1 में कन्वर्ट करोगे. उसके बाद just put the values of x1 y1, and x1 y1 are nothing but the outside points जिससे आप लोग ellipse पे tangent draw कर रहे हो. Let's say आप इस point से tangent draw कर रहे हो, तो जो ये वाला point है ना, मैं जिससे आप tangent draw कर रहे हो, this point is my x1 y1. ये हम लोग जनरली भी पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा वाई वाई वन से. सिमिलरली 2xy को रिप्लेस कर दूंगा एक्स वन वाई इंटू वाई प्लस वाई एक्स वन ऐसे करके, एंड 2x को एक्स प्लस एक्स वन से, 2y को वाई प्लस वाई वन से. सो मैं ऐसे इन चीज़ों को रिप्लेस करता हूँ. दिस थिंग्स आई स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बाकी सब क्वेश्चन बेसिकली सिंपल थे. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको इलिप्स की डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस और दो फोकाई के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, वो सब जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऑक्सिलरी सर्कल की क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मेरा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के होंगे, और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के होंगे, तो जो मेरी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी वो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही हाइपरबोला में भी होता है. हाइपरबोला में बस कुछ फॉर्मूला चेंजेस होते हैं, बाकी मेजरली अगर आपने इलिप्स ढंग से समझ लिया तो हाइपरबोला इज नॉट टफ, because hyperbola can be easily understood and it can be easily learned by using ellipse formulas because they are majorly same. Okay, so I hope आज का सेशन समझ में आया होगा आपको. So बस वो इतना ही था कि you get a fair idea of what the PYQs which are asked in JEE mains. So अगर आपको ellipse की basic knowledge है, then you can easily character with this chapter and score a good marks here. Okay, so on this note, now let's end this lecture. And if you are facing any problem, so I suggest you to revisit this lecture, and then you will get the answer for your query. Okay, so now let's end this. Thank you.